जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भज गो भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
So Srimad Bhagavatam, 4th canto, which is entitled The Creation of the Fourth Order. Text 1, which is entitled Genealogical Table of the Daughters of Manu. So please repeat after me if you have your mobiles on with you. Maitreya Vacha Manostu Satarupayam Tisatra Kanya Jagrire Akutir Devahutisha Prashotiriti Vishvrutaha. Maitreya Vacha Manostu Satarupayam Tisatra Kanyas Jagrire Akutir Devahutisha Prashotiriti Vishvrutaha. Maitreya Vacha Manostu Satarupayam Tistraha Kanyas Jagrire Akutir Devahutisha Prashotiriti Vishvrutaha. Synonym. Maitreya Vacha, the great sage Maitreya said, Namahatu of Swayambhu Manu, Satarupayam in his wife, Satrupa, Tisraha 3, Kanyahacha, daughters also, Jagnire gave birth, Akutihi named Akuti, Devahutihi named Devhuti, Cha also, Prasutihi named Prasuti, Tri iti thus, Vishvrutaha well known. Translation by His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maitreya said, Swayambhu Manu begot 3 daughters in his wife Satrupa, and their names were Akuti, Devhuti, and Prasuti. Om Jnana Timiranda se Jnananjana Salakaya Chakshmitamenam Tasmai Sri Gurube Namah. Sri Chaitanya Mano Vishnavasthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Supadandikam Bandeyam Sri Gurushita Padagamanam Sri Gun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Sajivam Sadhuetam Sabadhutam Prajan Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhan Vitam Ja He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpati Gopes Gopika Kanta Radha Kanta Namastuti Taptikajana Gaurangi Radhi Vrindavanishwari Vishwabhan Shude Devi Pranamami Hari Priye Vangcha Kalpataru Vyasya Kripa Sindhu Vacha Patita Nama Pavani Vyo Vaishnavi Vyo Namo Nama Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Hutta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Vishta Budrishma Japataka Samanidhanamani, Namacharya Padaya, Nita Kripa Vardhane, Gaurasada Madaya Nagar Ram Tane. Namo Vishnu Padaya, Krishna Vishta Budrishma Bhaktivedanta Samanidhanamani, Namaste. Saraswati Devi Gaurmani Pacharani, Nivises Pandavadi, Pasade Tarani. Jai Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों और वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की अमृत धारा निरंतर बह रही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन में कम से कम तीन खंड कांटोस हमें समाप्त करने का मौका मिला। हम देखिए 4 के साथ क्या होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी इनके बच्चों के बारे में बात हो रही है, ज्यादा फिलोसफी नहीं है, तो देखते हैं हम कितना जल्दी इसको समाप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ऑफर आवर रिस्पेक्ट ऑफ सेंसेस unto our spiritual masters, Om Vishnupad, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, by whose order I am engaged in this Herculean task of writing commentary on Srimad Bhagavatam.
as the Bhaktivedanta purports. So offering the obeisances unto his Param Guru, that he ordered me to write the purport, and here I am, doing that Herculean task, not of my own efforts, but by the mercy of Guru and Gauranga, and by the mercy of our devotees in Parampara. He says, by his grace, we have finished 3 cantos already. It is not an easy task. And we are just trying to begin the 4th canto. He is trying. By his divine grace, let us offer our respect of obeisances unto Lord Chaitanya, who began this Krishna consciousness movement of Bhagavad Dharma 500 years ago, now 535 years ago. And through his grace, let us offer obeisances to the 6 Goswamis. Bande Rupa Sanatano Raghu Yugo Jiva Gopalako. And then let us offer our obeisances to Radha and Krishna, the spiritual couple who enjoy eternally in Vrindavan with their cowherd boys and damsels of Brajabhumi. Let us also offer our respect of obeisances to all the devotees and eternal servitor of Supreme Lord. अगर आप ये सुन रहे होंगे, आपको ध्यान आ रहा होगा कि चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी मन बनाया, तो इसी प्रकार जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने इसी प्रकार सबका धन्यवाद किया, सबको नमन किया, सबको प्रणाम किया, सबसे कहा कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ लिख सकूं। बिल्कुल वही परंपरा को फॉलो करते हुए प्रभुपाद जी भी सबको धन्यवाद कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, in this 4th canto of Srimad Bhagavatam, there are 31 chapters, and all these chapters describe the secondary creation by Brahma and the Manus. The Supreme Lord himself does the real creation by agitating his material energy, and then by his order Brahma, the first living creature in the universe, attempts to create the different planetary systems and their inhabitants, expanding the population through his progeny. Like Manus and others, progenitors of living entities who are perpetually under the order of the Supreme Lord. In the 1st chapter of the 4th canto, there are descriptions of the 3 daughters of Swayambhu, Manu, and their descendants. The next 6 chapters describe the sacrifices performed by King Daksha and how it was spoiled. Thereafter, the activities of Maharaja Dhruva are described in 5 chapters. Then in 11 chapters, the activities of King Prithu are described, and the next 8 chapters are devoted to the activities of Prisheta's king. As described in the first verse of this chapter, Swayambhu Manu had 3 daughters named Akuti, Devhuti, and Prasuti. Of these 3 daughters, one daughter, Devhuti, has already been described along with her husband, Kardama Muni, and her son, Kapila Muni. In the chapter, the descendants of the first daughter, Akuti, will specifically be described. Swayambhu Manu was the son of Brahma. Brahma had many other sons, but Manu's name is specifically mentioned first because he was the great devotee of the Lord.
In this word, there is also the word cha, including that beside the three daughters mentioned, Swami Manu also had two sons. Umagyanatimirandhasya Jnananjansalakaya Chakshunmritamenam Tasmai Sri Guruve Namah. This I've done, I think. Okay. I'm forgetting. All right. तो प्रभुपाद जी ने तो लिख दिया है कि स्वयं मनु और शत्रुपा, स्वयं मनु ब्रह्मा जी के शरीर के ऊपरी भाग से निकले और शत्रुपा ब्रह्मा जी के निचले भाग से निकली और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली बाय द ऑर्डर ऑफ ब्रह्मा जी। और इनको कहा गया तुमको प्रोजेनी स्टार्ट करनी है। अब प्रोजेनी क्यों? क्योंकि जितने भी जो जीव हैं बिना शरीर के, वो भौतिक संसार में भटक रहे हैं। जब तक उनको जो है ग्रॉस बॉडी नहीं मिलेगी तब तक वो परेशान रहेंगे। तो उन जीव आत्माओं को शरीर देने के लिए जितने में हमारे प्रजापति थे वो पैदा हुए, उन्होंने शादियां की और ये सब जो सिमिनल थे, सब सेक्सुअल उससे पैदा हुए। और इस प्रकार उन आत्माओं का जो भटकती आत्मा थी, जो भगवान के धाम वापस नहीं जा सके, उनको शरीर मिले और शरीर मिलने के पश्चात वो अपना भक्ति संपूर्ण करके बैकुंठ धाम चले जाएं। स्वयं मनु और शत्रुपा की तीन जो बेटियां आकुति, देवती, परशुति, इन तीनों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भगवान ने जन्म लिया। आज मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज मैं आपको पूरा बताता। शायद कल परसों जब काम करे तो मैं पूरा आपको जेनेटिकल ट्री बताऊंगा कि किससे क्या हुआ, किसका पति कौन था, क्या बच्चे थे, क्या क्या हुआ। तो इन तीनों लड़कियों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भगवान इनके गर्भ से पैदा हुए। दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने इसमें ज्यादा नहीं लिखा, लीजिए दूसरे चैप्टर दूसरे में फटाफट ले लेते हैं। आकुतिम रुचये प्रादा आपे भ्रातर्मतिम नृप पुत्रिका धर्मां श्रित्य शतरूपानुमोदितः। Akuti had two brothers, but in spite of their brothers, King Swayambhu Manu handed her over to Prajapati Ruchi on the condition that the son born of her be returned to Manu as his son. This he did in consultation with his wife Satrupa. Prabhupada says, sometimes a sonless person offers his daughters to the husband on the condition that his grandson be returned to him. हमारे कांग्रेशन में बहुत सारे भक्त कपल हैं जिनकी बेटियां हैं, जिनको बेटा नहीं हुआ। अगर किसी तरह से त्रस्त हैं तो प्रभुपाद जी ने यहां लिख दिया, नोट कीजिए कि जो है अपनी लड़की की शादी कराकर उनसे उनका बच्चा मांग ले, उसका पालन पोषण करे पिता की तरह, और वो बच्चा भी उनको तारने के लिए काम कर सकता है। So it is similar to Srila Prabhupada, nothing wrong in that. Adopted his son and inherit his property. This is called पुत्रिका धर्म। बहुत सारे हम लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन आज पता चला है। ये पुत्रिका धर्म है कि अपने पहले बेटे को
अपने माँ बाप को दे दे. Which means that by execution of religious rituals, one gets a son, although one is sonless by one's own wife. But here we see extraordinary behavior in Manu, for in spite of his having two sons. कौन है two sons? Uttanapada and Priya Vartaka. He handed over his first daughter to Prajapati Ruchi on the condition that the son born of his daughter will return to him as son. उनको मालूम था इनसे यज्ञ पैदा हुए. उस विष्णु का नाम है यज्ञ, और उनकी पत्नी भी उनकी साथ में दक्षिणा नाम की लड़की पैदा हुई, जो स्वयं जो थी लक्ष्मी थी. और फिर हालांकि दोनों रुचि और आकुति से पैदा हुए, क्योंकि वो ब्रह्मा का बेटा बन गया, तो ब्रह्मा ने अपने बेटे की शादी यज्ञ की शादी उससे कर दी, दक्षिणा से कर दी. साउथ इंडिया में आजकल बहुत सारे हैं कि फैमिली में भी शादी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक शास्त्रों से है. Srila Vaishnava Chakravarti Thakur comments in this connection that the king Manu knew that the Supreme Personality of Godhead would take birth in the womb of Akuti. Therefore, in spite of having two sons, he wanted the particular son born to Akuti because he was ambitious to have the Supreme Personality of Godhead appear as his son and a grandson. अब आप कह सकते हैं कि देवभूति का कपिल को क्यों नहीं मांगा, लेकिन कपिलाचार्य ने जो थे सांख्य फिलोसफी देनी थी तो उसके लिए छोड़ दिया, या उसकी शादी बाद में हुई, तो पहले लड़की से वो उन्होंने जो है उसका सन ले लिया और उसका नाम था यज्ञ. Manu is the lawgiver of mankind, and since he personally executed this Putrika Dharma, we may accept that such a system may be adopted by mankind also. This even though one has a son, if one wants to have a particular son from one's daughter, one may give one's daughter in charity on that condition. That is the opinion of Srila Jiva Goswami. Amazing, isn't it? श्रीमद् भागवतम आपको ऐसी चीज बताएगी जिसको आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ये सोचा था, और हमें श्रीमद् भागवतम बता दी है. हमारे परम गुरु भक्ति वेदांता स्वामी शिलपाद कह रहे हैं, दिस इज ऑलराइट, यू कैन डू दैट इफ यू वांट. ओके, टेक्स्ट 3. प्रजापति स भगवान रुचिस्त श्याम जी जनक मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी paramena samadhina. Ruchi was very powerful in his Brahmanical qualification and was appointed one of the progenitor of the living entity, begot one son and one daughter in his wife Akuti. Purport. The word Brahma Varchasi is very significant. Ruchi was a Brahmana and he executed the Brahmanical duties very rigidly. As stated in Bhagavad Gita, the Brahmanical qualifications are control of the sense, control of the mind, cleanliness within and without, development of spiritual and material knowledge, simplicity, truthfulness, faith in the Supreme Personality of Godhead, etc. These are many qualities which indicates the Brahmanical personality. और भगवद गीता में तो कहा समाधम तपो शौचम शांति राजमे वच. तो ये क्वालिफिकेशन ब्राह्मण के हैं. Therefore, he is specifically mentioned as the Brahma Varchasavi, one who is born of a Brahmana father
but does not act as a Brahmana is called in Vedic language a Brahma Bandhu, and is calculated to be on the level of Shudra and women. This is, in Bhagavatam we find that Mahabharata was specifically compiled by Vyasadeva for Istri Sudras Brahma Bandhus. Reference in Bhagavatam 1.4.25. Istri means women. Sudra means the lower class of civilized human society. And Brahmana Bandhu means person who are born in the families of the Brahmana, but do not follow the rules and regulations carefully. All of these three classes are called less intelligent. They have no access to the study of the Vedas, which are specifically meant for persons who have acquired the Brahmanical qualification. This restriction is based not upon any sectarian distinction, but upon qualification. The Vedic literature cannot be understood unless one has developed the Brahmanical qualification. It is regrettable. Sometimes आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु जी ये डिवोटी हैं, they are not behaving properly, it is happening, that is happening, this is happening, that's happening. Answer is here. The Vedic literature cannot be understood unless one has developed the Brahmanical qualification. We lack the Brahmanical qualification, that's why we either misread it, we have the doubts, or we don't take it so serious. Prabhupada कहते हैं, it is regrettable, therefore, that persons who have no Brahmanical qualification and have never been trained under a bona fide spiritual master, nevertheless comment on Vedic literature. Like the Srimad Bhagavatam and other Puranas, for such persons cannot deliver their real message. Ruchi, Prajapati Ruchi was considered a first-class Brahmana. Therefore, he is mentioned here as Brahma Varshasvi, one who had full power in Brahmanical strength. तो आज आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे हम लोग कई सालों से हम चांट कर रहे हैं, कई सालों से हम भक्ति में हैं, लेकिन हमसे गलत काम हो जाते हैं, ईर्ष्या हो जाती है, क्रोध हो जाता है, सब कुछ हो जाता है. बस इसका उत्तर यही है कि we have not developed the Brahmanical qualification. Okay, let me take the text forward also. Yastayo Purusa Sakshat Vishnu Yagna Sarupadrit Ya Stri Sadakshina Bhute Ya Stri Sadakshina Bhute Hamsa Bhutana Payini. On of the two children born of Akuti, the male child was directly an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, and his name was Yagna. In Satyuga, the character of these were all red, which is another name of Lord Vishnu. The female child was partial incarnation of Lakshmi, of the goddess of fortune, the eternal consort of the Lord Vishnu, and she was known as Dakshina. Lakshmi, the goddess of fortune, is the eternal consort of Lord Vishnu. Here it is stated that both the Lord and Lakshmi, who are eternally consort, appeared from Akutis simultaneously. Both of the Lord and his consort are beyond this material creation, as confirmed by many authorities. Narayanaha Paro Vyaktat. Therefore, their eternal relationship cannot be changed. And Yagna, the boy born of Akuti, later married the goddess of fortune. खाली यही नहीं, जब आपने देखा होगा
जब किंग बेण की जब जो बॉडी को चर्न किया गया तो पृथु और अर्ची भी पैदा हुए और उनकी भी शादी हुई। लेकिन ये सब क्या है? नारायण परो अव्यक्तात्। जो भगवान के कार्यकलाप हैं वो हमारी समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि और विवेक दूषित है और हम वही समझते हैं जितना हमको एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा भी कुछ नहीं और कम भी कुछ नहीं। Alright? So I think it'll be too much. 2 slokas, 4 slokas are more than enough. तो ये चैप्टर हम जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन द्वारा जो कुछ प्रभुपाद ने हमें बताया उसके बारे में हम कुछ समझ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। हरे कृष्ण। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।